He is happy that way. What is the problem there? But I am so busy that I don't have even 1 minute to die. 1 minute to die. एते बिजी इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी करछि नले पिला को पढोछि सेतिरे पिला माने मते रेटिंग दउछन्ती 91 इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ए टीचर कैन नॉट repeat it cannot continue as assistant professor or associate professor or less than 75% in student rating which is taken online by the university from all the students because they treat students as customers. You are customer, you are not tuition fee is not less than the okay, so the parents expect that the same return should come. So if you are students, you have every right to decide what sort of product you want. Product means how to make the product, sell in the market. That means what? It should be the best in the market. Otherwise, you will not be sold. Possible. ତେଣୁ ତୁମ ସିଲାବସ ର ଯାହା ଅଛି ତା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତୁମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ. That is why in our university syllabus is not just fixed by the university. It is called flexible syllabus. That means the syllabus can change. Like after COVID, the marketing syllabus has changed because there is no on-site marketing. Nobody is going to the mall to buy. How many of you go to the mall to buy? You don't go. Either झील पिला की पुओ पिला जानती ताका बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की सेठी भेटिवा पई जाईकी सेठी केएफसी बेबिसर खाई के आसीले नहले मैक्सिमम जानती जो प्रोडक्ट को गोटे फ्रिज नवा पई की गोटे किनिबे माइक्रोवेव किनिबो तो मा कहबे जे जाईकी सेठी जेटा भल लागो ता फोटोटा नै आ फोटोटा तो फोटोटा नै घर को आसीबो मा को दे दो मा सेतरे अमेज़न पे करिकी बार्गेन करी सब सस्ते आनिबे सेटा मॉल को किनले तुमको आउरी 5000 3000 का अधिक पड़ता था तमन से पई कोन मॉल तयारी हेतिला मॉल कोन एई पई हेतिला जे फोटो नै आसी घरे ऑनलाइन रे किनिबो हजार हजार कोटी कोटी टका करी जे मॉल बनिथिला तार बिजनेस इक्वेशन कोन हला तार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोन हला दुई साथ दे गला तो एई भलिया कॉर्पोरेटली सबु मैनेजमेंट थ्योरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबु दुई साथ हे जाउची सबु दिन because of the competition. आउट कंपटीशन आसिला माने तुमरे थ्योरी का गला पानी गला आउट नु आसिला राइट तेनु तुमको मैनेजमेंट नॉलेज भी से रकम फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट डायनामिक सिलेबस हो दरकार सब दिन नो नो जिंस तुम सिक्योर कर मतलब सेटा सब बेले कॉलेज रे भी पढेले हबनी तुम निजे पढि परिबो बर्तमान इति गोटे प्रश्न मते कहिलो जेटा गूगल तुमको आंसर नै देई परिबो हां अरे गूगल करी की सब आंसर तुमे पाइबो ताहले टीचर मान को रोल कोन टीचर मान को रोल हैला गूगल तुमको गोटे जणे भलो मैनेजर बनै पारे सब नॉलेज दे टीचर मान को रोल हैला तुमको मेंटरिंग करी की भलो लीडर बनै सेही पई जो माने कॉरेस्पोंडेंस रे एमबीए करथि ताको इंडस्ट्री माने नॉर्मली सिलेक्ट कला बेले टिके छी छाकर करथि तन कहले ना पर्सनल एमबीए पढिथि जदी गोटे कोठी फिजिकल पढिथि बस फिजिकल एई में पढंती जे टीचर माने ताको मेंटरिंग करी की ताको भलो लीडर बनेला सिखा सेटा दिन नसकी परियो चाल के थिला ओके हैविंग सेड दैट तुमको गोटे कथा सेटा कहि दिया आगु तापरे यार इंपोर्टेंट पॉइंट उडा डिस्कस करी हला तुमको टाइम भी नेगेटिव है काई ना तोरे मते गाड़ी पठे कि मो घर पाकु जळसुरु आडी जे माने आई शुड ट्राई टू गिव आउट एवरीथिंग पॉसिबल टू यू जहां जहां तुम्हें मते सब बेले पाइबोनी तापरे विल हैव अ डायनामिक क्वेश्चन आंसर सेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अंडर द सन तुम एई पने जो बहुत बड़ा पाठ पढिछि बहुत बड़ा जॉब करछि तेनो मो पाखे सब जॉब रो भंडार रहिछि मु तुम आंसर दे पारिबी सो द क्वेश्चन आंसर सेशन वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दैट नाउ इम्पोर्टेंट इश्यू मते कहलो जे तुम मित्रो हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर दैट यू विल बी born as human being in your next birth टेल मी
Anybody who is raising hand that you are sure that you will be born as human being in your next birth? Nobody is sure. I am also not sure. Our next birth रे যদি তুমি ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ହବ ସେଟା ଜାଣିଛ? Like suppose coming Sunday I suddenly end up in Nancy's place. Okay, that Nancy has been very good to me in this session and this and that, so I end up in her place. So what she will do? She will go to the market with her husband or with her husband. I don't know whether he married or not. Possibly she is married. Okay, she will go to the market with her husband and say, "ये अंगूठी देखो, मुझे कौन सी तक बोलो अंगूठी का इंती वाला सिर्फ कोड़ा कुकुड़ा का देखेगी ए एटा काटी देलो एटा दियो सुनला परे जो सेठी जल्लाद अछि से कोन करियो ताको इंती धरिबो गळाटा कच ठीक अछि किंतु से काटी देला बेले तारो नेन्सी रो हस्बैंड कहूची सेना मते लागुची जे ये बालेश्वरी लोक जळेश्वरी लोक बोते बेसी बेसी मांस खाद्य नै तो मते लागुची एटा कम पडिबो तेनु संगे संगे नेन्सी रो अंगूठा जो एठी जातिला ती गोटे बड़ कुकुड़ा आडू चली गेला और ठीक अछि लाल काटा जेतेबे कोला कुकुड़ा को अंगूठी देखैतिला कोला कुकुड़ा कहूची कु अंगूठी देखिला परे कोन हो सुडा जानिची से कहला कु तापरे एपटू लाल कुदी अंगूठी चली आतिला कोला कुकुड़ा कहला बच गया और लाल कहूची मोर टाइम अछि गला से कहला कु कहले छाडी के तो धरला काटिला ताकू खाई के आराम से तो देईता तो देई मास See, this can happen to you and me in our next world. Please remember. This can happen to you and me. और खासी को काटला बेले इनका ठेली ठेली की नहीं की जाओ थाई से जे काटियो से जाऊ नथि हो मां मां करके काटे कांदो दियो ताको छाड़े से तो धरी बैठ सेटा भी हमर ही कर तेनु none of us is sure that we will get another life as human being. So what is the moral of the story? Moral of the story is as human being, you can do anything in your hand. You can achieve anything in your life. You can achieve anything in your life. My mother used to tell this story that a gote janmo paito monisho jaha koribu bilkul ki korega. Next bathra kulta billi kidiya kya janmo ho tor kichi pata nahi. Chetebele tote jiye chahiye maribo. Even if you are born as lion, the king of forest. What are the two choices for you? Either you will be shot by the hunter or you will be kept in the zoo. Zoo ro gi lion rene so chuale jai ki chepo pokebe kon ta porkale pokebe kon karebe. So even if you are born as king of the forest, then also there is no respite. So please celebrate your birth as human being and try to achieve all big things in your life. Big things means. So my request to all of you, and I hope all the students will follow. I stand before you as a living example. Anywhere you try to find any problem, you have I'll share my email ID and number, so you can call me and curse me. Sir, आपन कहले हे बोले हबो काई होगी. I tell you, I'll guide you. But never ever ये लाइफ को छाड़ो नहीं. ये लाइफ भगवान देची माने या तो पकड़ी की. Number 1 is dream big. The first thing you do is dream big, all of you. Never dream small. You are born as human being to dream big, not to dream small. Okay, oversized dream देखियो सब बड़े. And after the big dream, next is change your dream with all the passion. What is passion? Anybody who can tell me the definition, the meaning of the word passion? PSSION. ओडिया रे कि हिंदी रे दे जान के को PSSION passion माने को with all of my heart and all of my affection. तार एग्जैक्ट मीनिंग किछि ओडिया रे नाही जोटा गुटे मीनिंग हेई परिबो पाखा पाखी सेटा को कहल जाउची पागलपन. ओके ताकू हिंदी रे होय तो कि उर्दू रे ताकू जुनून कहि पारो तुमे किंतु गोटे पागलपन संगे गोटे ड्रीम पछरे दौड़ीबा
पड़िबो यस जिमति का मु गोटे फार्मर रो पुओ हई गोटे गरीब घर रो पिला हई मु बड़ ड्रीम देखली ए भाई हम कर दे बिकॉज़ डिस्टर्बिंग मी अच्छा नहीं इट्स ओके अच्छा yes I'm sorry I get disturbed okay for a disturbance कोन ना chain of flow टा फिर rebuild करियो it is not that easy अच्छा okay कौन बोल रही होगा yeah patient so तमे यदि with पागलपन गोटे ड्रीम को चेंज करिवो ताहले देखिबो कोन ना से ड्रीम को चेंज कला पळे तुमे जहा मिस्टेक करूथुओ से मिस्टेक गुडा को circumstances right कर दो I give you an example like all of you have studied and you know Columbus never wanted to discover America he wanted to discover India Columbus wanted to discover India but by mistake nahi by blunder he reached American shore and then when he found some people red looking people they are coming on the seashore Columbus got flabbergasted. He got confused. अरे मैं तो पढ़ा था हिस्ट्री में इंडियन सब थोड़ा काले काले होते हैं ये सब लाल लाल लोग किधर जा रहे हैं then but his passion was so strong his pagalpon was so strong that he has reached India though he never reached India it was America only he reached he thought he has reached India so he said okay history बोधे सब इंडियन कला लोग लेखा नथिला बेसिकली लोग कला बाकी जेतिक लोग बोधे से लाल so he started calling them red Indians please remember just because Columbus committed a blunder of reaching the wrong place the people were started being called red Indians and even today the aborigines of America are called red Indians though they have nothing to do with India but my question to you is different I'm asking you the question is whether this blunder of reaching the wrong place prevented his name from being written in golden letters in the annals of history? No. He would have been equally famous if he would have discovered India. So what is the difference between right and wrong? There is no difference between right and wrong. There is no difference between right and wrong. Only your thinking makes it so. So coming back to the point, if you change your dream with all passion, then all mistakes will become right. All mistakes will become right. Like some days back, anybody who was going for arranged marriage, love marriage, it was wrong. It was always arranged marriage. Love marriage पहले तो गोरु बाहर कर दो तुले. हम गाँव में तो देखी चीज जोड़े से गोरी उतर रहे थे काम करते ला जो जो बोल पे ऐसे लग रहे था बाहर है मतलब वो ठगवा को वो दादाजी जीवा को देले नहीं बोले they are rotten people. He has run away from Calcutta with a girl. So will not attend this marriage. बोले नहीं दादा मुझे के तागर बैग पे ही करा. तो बैग पे ही कर बाहर है आपसे लगाए पैन कर दो यहाँ के तो मुझसे तो बताया नहीं. Now the old man must be actually he must be turning his head in the grave who did not allow you to attend the marriage of a person just because he had a love marriage. When he saw all his potas and potis, there is not a single person who has gone for arranged marriage, including myself, including my two sons. All of us have gone for love marriage. So, वर्तमान कौन है ला? जो दी तुम इधर कहीं जो arranged marriage जीवो ता पोजीशन कौन जीवो जाने तो ता पोजीशन हो म्यूजियम रे से क्या कर देवे देखोगे here stands Mr. So and so. Your program please. Huh? Somewhere, yeah. No, somewhere we will not do it, but by chance. Because he is a very handsome boy. But by chance, suppose somewhere corridor में निकले म्यूजियम में गया ही तो ना थोड़े बोर्ड में लिखा ही तो here stands somewhere. He was so unfortunate that he could not fall in love and had to go for another marriage. So please try to please hear and watch it. Video अगर हो जाएगा पैसा जब थोड़ा कास्टला दिखेगा ठीक है हम the right from the wrong
तुमने कहबा को किए the circumstance will decide which is right and wrong as far as we management students are concerned. There is no difference between right and wrong. So coming back to the point, if you are pursuing your dream with all passion, all mistakes will become right. As I gave you example, also a funny example I gave about the Columbus I gave. Similarly, all your weaknesses will become strength. If you pursue your passion, pursue your dream, big dream with all passion, all your weaknesses will become strength. Again, I am giving you an example. Like there was a boy in a village, जी की तुतला थिला किसी को अगर कोई ता घरे ता बापा मां दिज भौणी अछंती भाई अछंती समस्त बहुत गरीब तेणु there was one person working in that village in a company. The company's business was printing Bibles and selling in different territories in Odisha. Okay, now से पिला दिने धरला से जे अछि मार्केटिंग के काम करे गोटे कंपनी रो पिला से गाना सी घर को जाइतला ता धरला त कहला दादा मते गोटे चाकरी कर दिए तुम कंपनी काहे कि ना हम एते गरीब जे एठी समस्त खाया मिलनी हम कोनी तेरो मते किसको गोटे चाकरी कर दे सत्य बेले सी कोन कहला ताकू कहला रे तोते कोन चाकरी कर दिबी तू तुला तो मोर तो किछि बाहुनी किछि कथा सब कथा रे तो करूछु तू जानिनु कि कहला कहला मैनेजमेंट पाठ में सब पढिछु फॉरेन रो पढिछु इंडिया रे पढिछु मैनेजमेंट पाठ रे कम्युनिकेशन तू जदी न करिवो किडिवो तो जिन सके तू तो कम्युनिकेशन तू करि पारु काहे कि ना तू तो तेणु तोते को देबी नहीं चाहिए से कहला हम तो तुम गोड़ छाड़ीबी हम घर मरी गए समस्त खाया को सी तेणु गोटे प्लान कला जो कि हम भी बहुत सुंदर करछि जी कला जे याकू गोटे स्टेराइल टेरिटरी जदी मो कर देबी मैनेजर सेल्स मैनेजर जो किसी किछि बिक्री करि पारिबो नाही एवं किछि दिन परे जते मते आसी कहइबो सर मु किछि बिक्री करि पारलिनी से आपा आपे चाकरी छाडी घर को चलिबो मते ताको चाकरी बाहर करे किंतु हेला जेटा सेटा ता उल्टा से पिला जाई कि गोटे मास रे से 10000 कॉपी ऑफ बाइबल बिकी की बहुत रिकॉर्ड प्रॉफिट करी गेता you know the chairman of the company as you do in private sector they increased his salary and they promoted him तापरे तार फेलिसिटेशन फंक्शन एवणे होतला जळे समस्त का प्रेज करे तापरे लास्ट ताको माइक का दिया जे तुमे को जे तू तुतला है कि जते तू पता भी कोई करनु ठीक से तू किमिति एते बड़ जिंस अचीव करू तोर तो कम्युनिकेशन किछि नथिला तू एते बड़ जिंस किमिति अचीव करू डू यू नो व्हाट इज द रिप्लाई हिज रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग हियर मी आउट सो ही सेड सर मु किछि करिनी I did not do anything. I go to a householder's house. I tap the door, and the moment the householder opens the door, I'll be opening the pages of my Bible book which I want to sell, and then I'll say, don't buy this book, buy this Bible. I'll read it for you. Then he starts reading. I'll read it for you. That is the time from the corner of the house, the lady of the house who are very kind-hearted, like Nancy and all that. So they are very kind-hearted people. So see hard that somebody is struggling to talk and trying to sell something. She comes running and says, I can see so much of pain and agony on your face when you say, I'll read it for you. Don't read it, I'll buy it. Don't read it, I'll buy it. शेयर किसे 10000 कॉपी बाइबल बिके दा तो हमर मैनेजमेंट साइंस कहइबो जे कम्युनिकेशन पाई की तोमर कम्युनिकेशन स्किल कहइबा स्किल इज वेरी इंपोर्टेंट व्हिच शी डिड नॉट हैव इट मींस व्हाट इट मींस योर वीकनेस विल बिकम योर स्ट्रेंथ लाइक हिज वीकनेस वाज पुतला but that became his strength as a result of which he succeeded so please remember this in your life always that when you chase your big dream with passion, all your weaknesses will become strength. Okay, jani paigoni seta ape ape to strength is. So, as I said, the moral of the story is that having said that, important is hoche je
परफॉर्मेंस का इंपोर्टेंट काहे के हला एनीबॉडी हु इज सम तो बोलतली जा समझते को तो ब्लॉक के रह जा काम किछि करबुनी सब दिन खाली हाई मारिबो और पानी खाइबो तापर कि तो धर्म संपड़ ठीक আছে तापर हठात कि ना समस्त परफॉर्मेंस কথা काहे कहू now nobody talks of anything else in the corporate if you go for a job there they are talking only about performance and key result area कौन एरिया में तुम मते अचीव करके दबु जो तरे मो कंपनी रो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ियो एटा काहे को आरो एनीबॉडी एटा सब इंपोर्टेंट है हां एनीबॉडी हैज सम आईडिया एटा समस्त को पाई खाली मैनेजमेंट स्टूडेंट पाई तो जो काम करिवो ए सब से करिवे पाठ so what do you mean by performance and why it has become so important what is the cut off date from where people started talking about performance एटा तुमको जानिबा दरकार थिला कारण होची सब बेले फंडामेंटली क्लियर हो लाइफ रे किछि दिन तो न जानिले भी किछि जाय आसे नहीं दुनिया रे हजारे को इग्नोरेंट मु भी इग्नोरेंट बहुत दिन से जाने नहीं किंतु जोटा जानिबो ता अंडा तेरो उपरोजा पूरा क्लियर हो superficial knowledge is not going to take you anywhere it will create a lot of problems for you but it's not going to help that I am sharing with you I can tell with my own example whatever subjects I had superficial knowledge I failed and where I had fundamental knowledge I succeeded तो तुम्हें ये जानी ना तुम कोच कौन परफॉर्मेंस आसला ताउची 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हैला ग्लोबलाइजेशन हवा परे एते कंपटीशन इंडिया भीतर को आसी गला जे कंपटीशन आसीला मात्रे परफॉर्मेंस चैलेंज गोटो बुझी बात तेनु ग्लोबलाइजेशन कोन एनीबॉडी हु कैन टेल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन यस globalization is a thing where the government of India has allowed the out of India's companies and other ones to participate in India's marketing and also have allowed the India's competitors to. So government decided this. Yeah. Before that, the globalization was not there. Only the Indian market was there, doing the market thing, buying and purchasing the things. But after globalization, even there was some restriction given by the government of India. Some taxes were like. तुम पूछो तो तब टिके अच्छा anybody else who has got some idea yes your point partly right anybody else why you have not thought about it this is tragic you should have thought about it suddenly you वर्तमान देखो काहे कि कोई हठात India रे growth rate is the highest in the world now our growth rate is the highest এবং রাস্তা ঘাট গাঁ কো গলে তো জানি পারোনি সবু কংক্রিট এবং কেহি গরিব নাহাতি সমস্ত ধনী and a lot of development that has happened in this country এবং সবু লোক সারা ওয়ার্ল্ড রে মোদি কো পূজা করতে দেখাই do you think they love him why because India has become the biggest market in the world nobody can ignore us UAE रो मालिक जे चीफ सीएम कोन होची ताको अमेरिका प्रेसिडेंट कोन होची तमर कोन पाई करछुदी आगु तो कोन दिले काम कोन पाई it is all dictated by the market so how the market was created you should have known you should have asked somebody you should have asked your teacher যদি নকল করবে আর কাউ পছারিব তুমি লাইক মু স্কুল লেভেল পছারলি যে এই যে ছুই দেলে যে কোন তাকে কোনদি কি টাচ মি নট প্ল্যান मु सारा को पचाली छान मरि गेली दुलाम सर मते को आशीर्वाद करथिले सेते ही प्रश्न भाई यार फल पहुंचे जे बोलु टू उठली सी मते को मु तक पचाली मु सर टच मी नॉट प्लांट को छुईले एटा जाऊ नहीं जाऊ मु बोर गछ को छुची काई जाउनी मु अलगा गछ को छुची काई जाउनी या भीतर कोन होउची से प्रथम रागिले ओपरे कले सो खाडो कल्चर पचालुची किंतु ताको माइंड रे लागिला जे पिलाटा पचारि दिला मु ता आंसर देई पाथि सेई पारली
तापर से फकीरगंज सॉरी बालेश्वर जिला स्कूल ने जने साथ दिले तांकु पछाई पई बालेश्वर पर्यंत जाईछथि वीकेंड रे देकी सेठी तागरे बसिकी ताकु बुझितोनी भल कि तागरे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थिला ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम लागे मोटा मोटा बही एबी काम करे पड़छि कि दरकार नाही गूगल रे जा पचले बस सेतले तो किछि नथे आछि गूगल से सेटू बुझिकी आसी मते सिखै दे ए कहले तू गोटे सामान्य छात्र रे तो मोमेंट रे जे एके प्रश्न आसले ए जिज्ञासु भाव एटा तते बहुत दुर्लभ उठे मते आशीर्वाद सत्य तो मो कहला तो कि तोनो मन के काहे के प्रश्न आसुनी जे इंडिया रो ग्रोथ रेट हाईएस्ट थिंग दिया लाटा को मोदी मैजिक करला जो मोदी मोदी करि फेलो कि मैजिक इजी मैजिक किंती हला एवं सारा वर्ल्ड वर्ष नाम पडतले काहे कोन इनकी गोटे दिन काटे काहे जे इंडिया रो पडतले पडुनी कोन पाई होची एवरीथिंग स्टार्टेड विथ ग्लोबलाइजेशन जे सेतेबेले कोन थिला सेटा से कहला कि तू भल कि बुझी पालानी सी नोट्स थैंक यू वेरी मच से गेव द आईडिया सी कहला गोटे कथा जे सब जिंस इंडिया भितर बनाउते काहे कि ना द मोमेंट देयर वाज इंडिपेंडेंस के बाद पंडित नेहरू इंक्लूडेड द फाउंडिंग फादर they all thought that if you open up the market then all the competition will come from across the globe and they will eat over the Indian companies will be devoured so what they did they increased the customs duty commerce student ke hello commerce student ke ko ha to na kon Shreyans कहलो what is customs duty is the tax which will be collected from the foreigners or the Indians when we transact to them when we transact to them yes good anybody else what is customs duty is right anybody else you want to say what is the implication of that what is the implication of that friends that will be much more expensive sir. very good give you a big hand good at least mu खुशी है हमको तो गोटी पिले फंडामेंटल जिंस जानती ग्लोबलाइजेशन वर्ड को समझते यूज करतो कि माइंड रे केबे आतनी जिंसटा कोन एटा चढ़ाई ना जादू ना चॉकलेट व्हाट इज दिस why it did not come to your mind I blame your teachers also for that why they have not taught you this is so fundamental and he knows he told very rightly जे customs duty ता कहा ऊपर लागिवो जेतले बाहर किछि जिंसो इंडिया मार्केट को आसीबो ता ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लागिवो कस्टम्स ड्यूटी को समान इच्छा करे कि पंडित नेहरू टाइम रे इकोनॉमिस्ट माने बढ़े कि 900% कर देथिले 900% द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड तेनु बाहर जे कोनसी कंपनी इंडिया रे बिजनेस करबो किबा जिंसो लिखिबो तारो जिंसोर प्राइस ता 900 टाइम्स कॉस्टलियर हेइबो Suppose our friend Shreyans has gone to London with his girlfriend. Okay? And there they see a very good looking car, Porsche car. And his girlfriend says, you always say you love me, tell me how much you love me. Now I love you more than my life. Now okay, then buy this car for me. Then he goes to check up the price of that car in London market. And he finds it costs about 10 lakhs or 5 lakhs. Something like that. Should be 10. He says, okay, I'll buy it for you. My father has a lot of money I can buy in India, so I can buy it for you. But the problem starts the moment he goes to buy it. Because there they add customs duty to it, that is the landed cost of the car in India will be 70 lakhs. Because as I said, anything foreign that comes to India that will be subject to customs duty, and because of the 900% customs duty they have levied, so if the cost becomes 50 lakh, what that poor boy will do? This poor boy, he said, "अरे मेरे को माफ कर दे, मेरी माँ मेरे को माफ कर दे करके उसके पैर पकड़ लिया, बोला I love you so much but I cannot buy it for you, it is so costly." Okay, then they were coming back to India. So by Indian Airlines or whatever that time it was only Indian Airlines. So they are coming back and that time उसका मन में तो लगा श्रेयांश का कि एक ही लड़की को प्यार कर रहा हूँ एक बेचारी मांगी थी वो नहीं दे पाया उसका मन बहुत दुख हुआ तो फ्लाइट में बैठते बैठते उसको बोला
देख तू चिंता मत कर, I'll buy your car. So when they landed in India, what he gifted, you know? He had told his father, he gifted one ambassador car, Indian car, ambassador car. What is ambassador car? Ambassador car is slightly more reliable than a bullock car. It is slightly more reliable than a bullock car. So that car he gifted. Just imagine what would have been the impression of his girlfriend. If I was his girlfriend, I will give his star. I don't know whether she survived or not, you will be able to tell you. But important issue is, my question to you is, why ambassador became a bullock car? Because there was no competition. I am bringing you to the most important part of it. That how performance took its origin. It took its origin, and so let me complete that. So there was no competition. So ambassador car company knew, okay, whatever stupid stuff, tracks, we manufacture, it will be sold in Indian company. And people have no choice, they will have to buy it. So it resulted in producing substandard quality of goods and services for 70 years, for 70, for 50 years. And when you produce substandard goods, then what happens? Only your people can consume. You cannot sell outside. Outsiders, they are exposed to high quality things. So they will not buy your product or service. Even Bangladesh was not importing anything from India. Sri Lanka was not importing anything from India. Those days I was in reserve of India. I have seen. So if nobody is buying my product, then what is the implication? Yes, Shreya, can you tell me? If nobody is buying my product or service, what is the implication? There will be less trade in our country, which will generate less tax and profit. नहीं नहीं डॉक्टर इम्पोर्टेंट কথা তুমি ভুল যাচ্ছ হ্যাঁ সেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ଆମ ପାଖରେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଓକେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୋଉଠୁ ଆସେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିକିବି ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାଲା କିଣିବେ ୟୁରୋ ଦେଇକି ତ ରୁପି ଦେବେନି ତେଣୁ ସେ ୟୁରୋଟା ଆସିଲା ରିଜର୍ଭ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭକୁ যদি ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ବିକିବୁ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଡଲାର ଆସିବ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭକୁ ଦେନେ ଯେତେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେତେ ଖୁସି କି ହଁ right because we have to buy a lot of things from abroad they will not touch your rupee they will say pay me in dollar very full otherwise they cross but you don't have dollar because nobody is buying your product so what from dollar will come so we did not have any foreign exchange reserve because our products are so rusty that we did not have any foreign exchange reserve. So ultimately Dr. Manmohan Singh in 91 had no choice but to fall at the feet of IMF, supported by the Indian Prime Minister Narasimha Rao, and then IMF said that you are a beggarly country, your growth rate is only 3%. Very contemptuously branded by the famous economist Mahalanobis. He said 3% growth is Indian growth rate. It is the Hindu rate of growth. Okay, because they have learned that Hindu manଙ୍କର expectation ନଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ କରିକି ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଯାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର aspirational level is very low ତେଣୁ 3% is okay with them but with 3% how will you repay the loan you want to take from us because the loan we wanted in foreign exchange right because we didn't have foreign exchange reserve we need foreign exchange reserve to buy petrol diesel okay we need foreign exchange reserve to buy medicine and we need foreign exchange to buy aeroplanes because no airplane is manufactured in rupee they are all manufactured in dollar or euro so ultimately Manmohan Singh had no choice so IMF said that इतना गरीब country को हम लोग देंगे तो you have to sign a memorandum of understanding with us 12 point थिला सेतिरे ମୁଁ ସେଥିରେ associated ଥିଲି from India and we are monitoring in IMF so in reserve there in exchange control department ଆମେ ଏଠୁ ମନିଟର କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଯାଇକି ମନମୋହନ ସିଂ ଦସ୍ତଖତ କଲେ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଭେରୁ କଲେ ସମସ୍ତେ ମତରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛ ଦେଶର sovereignty ଚାଲି ଯାଉଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଇଯିବ ତୁମେ 12 ପଏଣ୍ଟ ସେ ଯାହା କହୁଛି କାହିଁ ସାଇନ୍ କରୁଛ
ସେତେ ମନ ବୁଝି କି ମୋ ଚଏସ୍ कोन सुसाइड करबे छोड़ा बे चॉइस अछि मते फॉरेन एक्सचेंज किए दो तू ते रद्दी जिन साउंड से बियूटी के इशू नहीं हमको डॉलर आसीबो हमको से किनिया कोई पड़ो लोन दबा पड़ो सेतिर फास्ट पॉइंट थिला 12 पॉइंट रो फास्ट पॉइंट आइला कोइला ओपनिंग ऑफ द मार्केट एंड ओपनिंग ऑफ द मार्केट माने होची कस्टम्स ड्यूटी को 900% रो आनी की 30% रो पहुंचा त माने कोन त माने हला 30% रे हमर ऑप्शन नथिला हम बोलू होला पर साइन करके जेते बेले मनमोहन सिंह फेरिले इंडिया ताकू आरबीआई रो ऑफिसर एसोसिएशन रो सेक्रेटरी थिली तो ताकू फेलिसिटेट करियो बोलली तो सब लोग बहुत क्वेश्चन पचारले इंडस्ट्री चेंबर और कॉमर्स समस्त लोग थिले पचारले जे सर आपण ए जो बोले या द्वारा आपण केते बडो भूल करछथि आपण जानि पता त कारण होची वर्तमान जहां भी इंडिया भीतर आसो एते कंपटीशन हो जा कंपनी सब बंद दे ते कथा बोली सर कहले सेते बेले से एआई को सब हसी कहले बडा कथा प्लीज रीड मार ताको तो बडो इकोनॉमिस्ट को आज पर्यंत देखि किबा ताको तो खराब पॉलिटिशियन आज पर्यंत देखि बिगेस्ट ब्लंडर मनमोहन सिंह committed was to come to politics. If he had continued as he promised, then he would have been the most famous economist in the world. Taco to follow the event. Unfortunately, he was dictated by sin. This is sort of we are not here to discuss. But important issue is जे এই जो जिनसटा हैला सेटा ता रिजल्ट कोन हैला ना संगे संगे इंडिया भली गोटे बड़ मार्केट खुली गला जेंती बेबे को मोदी को काहे भल फल दिए थे they are not in love with Indians because we are handsome or beautiful. They are looking at the market. We are 9.6 times of the entire Europe. Amaro jo customer basket सेटा होची 9 times 10 times of the entire Europe. तो जहां प्रोडक्ट बोलिए ताकि किनिया पड़िले इंडिया को पछरे भागियो पड़िबो हम गोडो धरिबो and our middle class is becoming so strong with a lot of money. हमको इग्नोर किए करो से मोदी गोड़ गोड़ पड़े बाध्य इम्पोर्टेंट किंतु जिनसेटा कोठो हैला स्टार्ट करिछि मनमोहन सिंह सीए सेते बेले जेते साइन कले गला परे कंपटीशन सब बाहर पसी आसिला इंडिया भीतर कंपटीशन जेते आसे सेते कोन हुए दीटा जिंस चेंज हुए कोनटा दुटा जिंस एटी लिखियो किछि नाही किंतु तोमे मने रख तुम लिखियो को जानिया को जो इच्छा আছে तने लिखि रखो जानिया को इच्छा नहीं भूल जाओ दीटा जिंस तुमर होबो कंपटीशन रे फर्स्ट होची सर्च फॉर कटिंग एज कंपटीशन जेते होबो दीटा को भितरे सपोज मो नाम होची नंदी धरि मु की कंट्रोवर्सी दियो करनी मो नाम नंदी मु होची गोटे जियो बनाउची नंदिनी सपोज मु भर पाउची दी जण गोटे होची श्रेयांश आउ जण हैला ये कोन कोना संबी ए दी जण जाको मते पठेवा चेष्टा कर हला का कोना नंदिनी को ना नंदिनी को जियो पठेवा चेष्टा कोन है जी ये गोटे मेकानी दो जदी से दिन खबर पाइबो से ताकू कॉस्टली आइलो माने कोन अच्छा जरो गोटे सकाळे ये मते बैटरी को आसी कोट टाई पिन्नी की आ गोटे मारुति कार जीती श्रेयांश को खबर मिलला जे काहे ना मु तो जोसु बाहर में तो द्रौपदी में जे 10 बार को बाहर की मते दी जण कहउतु जण को चूज करियो करियो सेठी हम जाइए जे यामार ऑप्शन नहीं हम कितु गोटे गाड़ी तेनु सी जीती खबर पाले ये मारुति रे आस्तिला डू यू थिंक इन द इवनिंग यू विल कम बाय मारुति टू woo me no you will beg borrow steel car की बड़ी कार होंडा सिटी कार के आसी मर्सिडीज धरि आसी तो आउट बोल हला सी आसी की मोटे मोटे ता माने कोन हैला ता माने देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द टू गेट राइट तेनु ये जहां करूची सी ता ऊपर बेंचमार्क है ऊपर लेवल पे जाऊ जस्ट अंडरस्टैंड द हम जहां कोई सबले इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिए काहे तो माइंड का फोकस दे रही सब्जेक्ट होता है जी पतो से भाई मोर पॉपुलैरिटी होची 91% स्टूडेंट रेटिंग रे अलगा लोकर बहुत ज्ञानी लोक प्रोफेसर ताकर सब बड़े से 80% काहे कि ना मु जो एग्जांपल दिए सेतरे ह्यूमन था सेतरे मजा कथा था जो स्टूडेंट मन को रिलेट कर पारती किंतु तार पाठ था पाठ 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 सिखियो आसु यार पाठ को
ଯେ ଯୋଉଠି କମ୍ପିଟିସନ ରହିବ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଟିଂ ଏଜ ରହିବ ଯେ ୟା ଉପରେ କଣ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ମାରୁତି ଆସିଲା ସିଏ ଆସିଲା ହୋଣ୍ଡା ଆସିଲା ଯଦି 3ଟା ଟଙ୍କା ମତେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ 8ଟା ଆସିବ କୋଉଥିରେ ମାର୍କେଟିଂରେ so what does it mean ଯେ ଯୋଉଠି କମ୍ପିଟିସନ ଅଫ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର କାଟିଂ ଏଜ ହବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢି ଚାଲିବ କାଲି ଧର ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପିଲା ନାହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୋ ଜୀବନ ସରିଗଲାନି ମତେ ବି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବିନି ପ୍ଲିଜ ରିମେମ୍ବର ୟାର କାଟ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବିନି ମୁଁ କହିବିନି କି ମୁଁ ଗୋରବାଟରେ ଯିବି କି ସ୍କୁଟରରେ ଯାଇଯିବି କି ଗୋଟା ମତେ ସେଇ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି जो बेंचमार्क ହେଇ ଯାଇଛି ସେଇଟା ରହିଲା ସେଇ ବାଲା के ଟଙ୍କା ଆସିବ ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ହେବି ତା ଉପର ବାଲା ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା तो यार से पाठ कोन कंपटीशन रे ସବୁ ବେଳେ ତମର ହାୟର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ प्रोडक्ट ଚାଲିଛି ତେଣୁ कंपटीशन ର हायर क्वालिटी जे ମୁଁ କହୁଛି ତା ମାନେ ହେଉଛି हायर क्वालिटी कोन ଆସିବ ତିନି ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଧର all with 3 year competing for the post of general manager in the company ଗୋଟେ general manager post ये ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନଦେବି ଗୋଟେ general manager post କେମିତି ଆସିବ all will be decided on the basis of performance ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଥିଲା କଣ କି ଏବେ ବି ହଉଛି स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जीओ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जीओ हां ये श्रेय से बहुत बढ़िया काम करे बढ़िया पिला पूरा सुना बढ़िया पिला इतने काम करके थकी जाए रात में नौकरी नहीं काम दी मोमेंट तारा कंप्यूटर ये तोरा का संबित पचार दो मते सर सतरे से इतने काम करे अपन किंतु जाने डू यू थिंक मोर किसी आंसर अछि अरे वो क्लास में मैं देखी जाने वाला वर्तमान এই সব জিনিসরে চালিবনি মতে দেখিବାକୁ ପଡିବ ତାର परफॉर्मेंस याटୁ ଭଲ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି परफॉर्मेंस what cannot be measured cannot be improved ये सेंटेंस को वेद भଳି ଆମର what cannot be measured cannot be improved so that brings us to the most important part of this topic that how to measure performance ତେଣୁ ବହୁତ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି मेजर किंतु କରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଚ୍ଛା ये किंतु କରି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଓ ସେ ସିકોଡି ଗଲା ଆମର ନା ଆଉ କୋନ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ମତେ ମିଳିବ how much time by the more record hochi I have spoken continuously for 6 hours in an Indonesian industry ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେଠିକି ମତେ ମୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ଲେକ୍ଚର ଦେଇକି ଆସ 3 ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି मुझे पहुंचला पर पहले कहले नहीं तुम गोटे दिन ये बिकॉज़ हमर ଗୋଟେ इंपोर्टेंट बिजनेस डील सेटा मु चाहूछी तमे टाइम करी तू कोन बोल ता बोली भाई देखो तुमे मोर हेडलाइन देके आनिছো तेनु तमे जहां सब्जेक्ट मु चाहू तुमे यूज करो ताकि गोटे दिन रो तो कंप्रेस कर तेनु मु ताकू कंटीन्यूअसली 6 घंटा ताकू करिक ताकू स्टार्ट तापर समझ पड़े तेनु आई हैव नो इशू I am a young man of 67. Please remember. So there is no problem. How can was the video call? Only. No. Okay. Fine. I go by whatever you do. So I try to finish in 15 minutes. Huh? Hello. या तुमको शॉर्ट करके पढ़ी जाउची तमे जोठी पचारे भी मत ठीक पचार I think that is the best way of doing it because it has a mark okay change in the two point देखो we need to plan our performance company में यदि goal आने को स्टिक पर देचू then how to reach that goal is through performance so we have to plan our performance marketing वाला कैसे करियो काम प्रोडक्शन वाला कैसे करियो this planning is a very important part of the performance second is to identify barriers to performance बहुत समय barrier रही पारे machine भी barrier रही पारे पुराना टेक्नोलॉजी किंबा the people they are demotivated or they do not have the competency to do that skill is also important na two things is important performance wise please remember one is skill the other one is your attitude
लाइक तुम देखिबो जे प्राइवेट स्कूल रे दरमा कम मिले किंतु सेठी पिला माने बहुत पढंती पिला माने बहुत भलो रिजल्ट भी करते का कारण होची टीचर मान को एते प्रेशर दिया जाए नेगेटिव प्रेशर को भी पॉजिटिव को जाय को हम मोटिवेट करके रखि थानी मैनेजमेंट से माने टीचर माने बहुत भलो पढ़ा किंतु सरकारी स्कूल ले देखिबो ताको पाखरे सेई जिंस नाही जे भलो स्टूडेंट रोले भी सेते ऊपर को रिजल्ट दे पारा so both play very important role one is your motivation second is your skill and barriers to performance that think to identify potential and groom them जो स्टूडेंट वाले पोटेंशियल जो देखो तो अच्छी बेसिक ताको ग्रूम कितनी करो तो मोटिवेट कितनी करो तो मेंटर राइट नेक्स्ट प्रोवाइड क्लियर एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक support दो whenever you try to mentor somebody or train somebody feedback what so you then identify training needs ताको कौन area training को प्रोड्यूस करो नेक्स्ट okay so these are the corporate vision and goals एकदम ऊपर होती the CEO I was CEO of 3 companies so that is corporate goals move ठीक करनी yeah I have to open an office in Dubai that is my corporate goal okay because business is there so now that goal how it will be effective departmental head I will tell HR please decide how many people will be there okay production please tell me how many machines will be there and which how many area will be there so that then the other fellow logistics so much goal तब एक्शन प्लान हो एला पर KRA is key result area means the moment now you join the company in the appointment letter itself your KRA will be written by the chairman or the CEO जे मु तुमको 6 मास भितरे एई की रिजल्ट एरिया चाहूची जे you will improve my sales by 10% you will try to recover money from the market by 30% you will try to create new territory for business by 20% eta the KRA and KRA is related to what variable salary private sector companies they don't go by any salary concept anybody uses the word salary you will be hanged there I went from RBI to private sector so RBI में salary जितना भी काम करो like मिदनापुर सालबनी रा पक्का चंपा कारखाना मुही इनिशिएटिव नहीं बने बहुत फटी राखी थी नोसी but what was the reward was me necessary तो सरकारी एजेंसी देते जिन से काउंसिल भी दे बेलुगे ସେଥିରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ହେନା ଅଛି ତେନା ଅଛି ତାପରେ ସ୍ୟାଲାରି ତ ସ୍କେଲ ଅପ ହେଉଛି ଏଇଆ ତାଠୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ତୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ତା ହୁଏନି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ତମ ସ୍ୟାଲାରି କୁ divide କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିକ୍ସ ସ୍ୟାଲାରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେରିଏବଲ ସ୍ୟାଲାରି ମାନେ सेटा केआरए साथ लिंक तुमे जेतिकी अचीव करिवो सेतिकी परसेंट मिलिवो ओके जदी मोर सैलरी धर 60 लाख के 70 वर्षकू माने तार 20% होई वेरिएबल सैलरी सेटा मोर चेयरमैन मते जहा देथिवो केआरए तार जेतिकी परसेंट में अचीव करिवो सेतिकी मिलिवो ओके राइट सो लास्ट रे होची केआरए सेटा भाग होई गला So what is KRA? KRA are those aspects of the job to which it is critical to achieve success. This is to देरी वाला example. Sales लो करो कैसे sales बढ़ेगा, कैसे recovery करो market, और कैसे नया customer create करो. Okay. Next. So it is self monitoring tool. कहना more KRA कैसे है ठीक है जी मुझे जाने की है. इनकी तो मुझे आगे बढ़िया. हाँ सी सेम तो भला काम करे. मुझे भला काम से दरकार कितने भला काम दरकार टारगेट को किसी ने खाली भला काम जान तो घर से तेल मारतो कि मु ताको सिटी में भल पाए मु ताको अधिक नंबर दे हला जेन तार की वैल्यू नाही से सब जिंस प्राइवेट सेक्टर में हुए ना एंड दैट इज प्लीज रिमेंबर सेही टाइम गोटे चासी घर छुआ सीईओ बनिला एवं रिजर्व बैंक छाड़ी की गली मो घरे मो स्त्री समस्त बहुत कांदिले कहले तुमको एटी रिजर्व में काम करो कि न करो तुमको एती पैसा मिलुची कोई तो कम पैसा मिलुची 40,000 टका मिलुची मात्र मिलुला किंतु मिलुची तो काई छाड़ी की चली प्राइवेट सेक्टर को नौकरी बाहर करतो काली संध्या बेले किंतु मु जेते देखि सेठी से माने मते यार 12 गुण अधिक पैसा मासरे मिले हला रिजर्व दरमार 12 गुण 10 गुण अधिक पैसा मते मिले सेते बेले मु रिस्क काई नै मुकली एठी जदी मु गट वर्ष सक्सेसफुल हेली ताले 10 वर्ष मो लाइफ रो मु सेव हे गला मु से 10 वर्ष खाली से हरिनाम भी करे पड़लो नहीं कहने सिटी की पैसा मु ऑलरेडी आन कर सर प्राइवेट
ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି because of this productivity and performance ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଛାପୁ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ଭଳିଆ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି এটা ଲିଙ୍କ ହଉଛି productivity and performance ତେଣୁ why care is an important for following reasons help identify the vital elements of a job तुम कामର vital element कोनटा कि ଗୋଟେ ସେଲ୍ସ ରୁ ମୁଁ କହିଲି ସେଲ୍ସ ବଢେଇବ ରିକଭରି ମାର୍କେଟ କରିବ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ଚେକ୍ କରିବ ସେଗୁଡା ତାର then make the job more effective तो ताकू जिंदगी को कुछ ଭଲ काम effectiveness is just somebody says sales को अपन कहीं भी 20% हाइक देइछन सैलरी यू दैट इडियट ମୁଁ ଏଇ କେୟାର ତମେ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲି ଇଏ ଦେଲି ତାପରେ ସେ କଣ କରୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନା ସେ ରାତି ଦିନ ଗାଉ ବହୁତ ଖାଲି ଖାଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ हो ये ପଚାରୁଛି तो ଏଟା ଧର୍ମା କେଉଁଟା ଚାକିରି କରିକି ଦଉଛି ତେଣୁ transparency and objectivity that is the hallmark of performance management ତାପରେ make the ठीक ଅଛି ଯାଅ चित्र गोटे कोन थिला से छाड़ देलो सेटा होची फोकसेस ऑन रिजल्ट ऊपर फोकस सेटा होची बड़ दिन परफॉर्मेंस में तुम केते काम करछ सेतिर को इंटरेस्टेड नो तुम रिजल्ट जिंती दिन जाक बुली गोटे सेल्स मैनेजर आसीबो बुतो पचार नाही सर आज दिन जाक मु खाइनी आज मु कोली एटी बुली सेटी बुली मु कोली ठीक अछि लास्ट में मते कहो तू केते बिक्री करि पारिबो तो दिन जाक घुरी घुरी की यदि बिक्री न कर पारली ताने बहुत यूएस वैल्यू आसे ठीक है तेणु रिजल्ट ऊपर फोकस करियो एटा नो डिफाइन द रिजल्ट एरिया दैट यू विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन और इस केयर डिफाइन द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन की मेजर कोई परफॉर्मेंस केयर है सेटा जिंदगी तो एग्जांपल सेंस कर देली सेही बढिया करियो नेक्स्ट को जा हां नेक्स्ट मीडिया करके मोजलो रिव्यू करियो की रिजल्ट एरिया मस्ट बी तेरा कोन एक गुडा तो होची तार टार्गेट देला के देखियो तो क्लियर डिफाइन ऑर्डर में तू कौन चाह सेकंड होची वेदर दैट इज रेलेवेंट टू इन जॉब ताकू तुमे केतेटा हॉस्पिटल में पेशेंट आछे ता सेल्स ऑफिसर तक कोई को देखियो कि सही तेरा रेलेवेंट हो स्ट्रेचेबल प्लीज रिमेंबर ये इंपोर्टेंट पॉइंट सो बट केयर एंड द फिक्स करू टिके स्ट्रेचेबल दो मु जानि छी जे श्रेयांश एतिके अचीव करि पारिबो 50 ताकू जानि कि मु 60 टारगेट नहीं कि सेटा पोटेंशियल को के खिंची की स्ट्रेच करि पारे सो इट शुड बी स्ट्रेचेबल देन नॉट एक्टिविटीज कौन सी थिंग्स आर मोर इश्यू इंटरेस्ट नहीं मोर इंटरेस्ट होती से लास्ट केते बिकला यदि किछि न होई कि पला दिन जाक कोन करतला एग्जाम करतला थोड़ा फालतू देयर इज नो वैल्यू ओके नेक्स्ट ओके सो तापर ट्रेनिंग में आइडेंटिफाई करो दिए जरा काम रिक्रूट करते से परिवर्तन को टारगेटेड गोल तान ताको कौन ट्रेनिंग yes private sector it will bonus is certainly not that everything is related to your performance and productivity सेटा जे न मिलला तुम जेतेबेले चाहिले सेटा आउट करो सेई नै जेतेबेले मते लोक कहंती जे याकोटे चाकरी दे ताकि किछि लोक दे किंतु देला परे इंपोर्टेंट जिंस हुए जे सी डेलीवर न कर पाला त बाहर कर देला ता बॉस जदी एके प्रोडक्शन बोलते बाहर कर गोटे केस है बाहर कर तापर से बाहर शिवम जी तक को टेलीफोन कोइ देले किंतु से प्रोडक्शन लोग कहउछि जे सर ताकू जदी मु अकोमोडेट करबी मते जो मो कॉस्ट टारगेट देछि सेटा अफेक्टेड होछि ताकू किए देखियो नले मते बाहर कर दे एनु एही काम संभाळी पारि मो बापो की जदी मो अंडर काम करछि ताकू टारगेट देबी ओ तो बापो बोली की टिके एक्सेस करबी 3 मास साठी तापर मो बापा की सब बात बोले because it is targets are fixed so collectively or others will put pressure that he is an idiot and why you are tolerating okay because it is affecting our performance therefore also mention the planned period for each training yes okay so these are the types of KRS या जाऊनी कहीं ना कहीं बहुत डिस्कस करियो पड़ियो गोटे एग्जांपल देगी एटा बेसिकली तुम ये जिनिसटा कहली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्तमान मते क्वेश्चन हो जाए because I wanted some questions from you that is coming to your mind on any subject as you have seen I have changed 7 jobs but most of the people in your family or in your village in your area they are happy with only one job till that I have changed 7 jobs and all are good jobs and all good jobs I have got on the basis of merit mo bapu chasi dila किछि बेकिंग नथिला टेकिंग नथिला
पैकिंग का घूस भी देनी कि पेइंग होते मोबाइल पर then तुम्हें संभव बेटा I stand before you as a testimony that you can also achieve much more than what I have achieved but I want you to work hard and जीत सबବେଳେ ରଖିବ ଜିନ୍ଦଗୀ जीत जो ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ जीत को ହେଇଥିବ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ achieve କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପଚାର yes କଣ ଲାରି କେହି ବୁଝାରୁ କିଛି ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହଁ please So which was the best job for you? Like from 7 jobs, which was the best one? that job was obviously when I became CEO and director in 3 private sector companies and in private sector